Assalamu alaikum and welcome to your lab number 6 of operational amplifier, which is another topic of your electronics labs. So we will be covering the open loop kind of gain operational amplifiers, right? जब आप feedback करते हैं in that scenario your operational amplifier work differently, right? So we would be covering your operational amplifier which is in the open loop case, right? So before going into the details we will as usual go into the theory of operational amplifier, and then after that we'll move toward the labs, right? So initially this is your you can say the symbol version or the equivalent circuit diagram of your ideal operational amplifier. Now you know there are two sets of input. One is the inverting input and other one is the non-inverting input, and जो आपका output आता है it is basically the difference of these two inputs, right? So on the output side whatever is basically amplified is nothing but the difference of these two set of inputs which we are applying to your operational amplifier, right? So what this circuit is itself, right? अगर आप इसकी बेसिक्स में जाएंगे तो you should know or you should have somehow the concept of differential amplifiers, right? So you can say that operational amplifier is a kind of advanced version of differential amplifier, but itself अगर आप op amp की circuitry देखेंगे 741 ही अगर आप IC ले लें which is basically an op amp, it won't be this much simple, right? उसमें almost 4 to 5 आपको BJTs और MOSFETs etc आपको transistors मिल जाएंगे, right? So if we go into the details of initial circuitry, so this is how there are two set of transistors, right? And आपने दोनों को कलेक्टर करंट के साथ कलेक्टर के साथ एक एक रजिस्टर आपका अटैच है. सिमिलरली आपकी जो एमिटर है उसके साथ भी एक अदर रजिस्टर अटैच है, एंड देयर आर टू सेट ऑफ वोल्टेजेस अप्लाइड. वन इज द पॉजिटिव वन एंड द अदर वन इज द नेगेटिव voltage, and both of them are the DC voltages. Again DC voltages as you studied previously, आप अपने trans amplifier को to bring it in the saturation region or to limit its function in a specific region, we basically apply biasing voltages which are basically DC voltages, right? So यहाँ पे आपका function इस तरह होगा that if you are giving a voltage on your transistor Q1 and this is for example your voltage, then होता ये है कि when this voltage is applied large current will flow through this path, right? And simultaneously जब यहाँ से आपका large amount of current flow हो रहा है तो इसका मतलब कि जो voltage आपकी output पे आ रही है वो इसके inverse आ रही है, क्योंकि if current is high means voltage is dropping here, and simultaneously यहाँ पे current less flow हो रहा है, so paired voltage आपकी क्या होगी, higher होगी. It means कि इन दो पाथ्स के फ्लो ऑफ करंट से फाइनली जो आपकी वोल्टेज ऑन योर टू आउटपुट्स आएगी वो एक दूसरे के इन्वर्टेड होगा, राइट? So these two set of voltages are the output voltage of a differential amplifier. So we can say that as we said in operational amplifier कि वो आपके differences को finally amplify करते हैं, right? So this is the kind of differential amplifier. अगर आप difference की concept को grab करना चाहते हैं, so you can study in more detail differential amplifier, right? So as I said previously, the current flowing through this path, the current जैसे ही आप यहाँ पे सिग्नल अप्लाई करेंगे यहाँ से आपका हायर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा एंड वोल्टेज आपके ड्रॉप होगी. सिमिलरली इन जो आपकी ऑपोजिट पाथ है वहाँ से आपका लेसर करंट फ्लो होगा, सो सेम वोल्टेज जो है वहाँ पे आपकी हायर अपीयर होगी. सो यू कैन से दैट दिस वर्जन इज बेसिकली गिविंग यू दी flipped output and this is the non-flipped output of your V in. Similarly अगर आप दोनों टर्मिनल्स पे अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंगली आपकी दो V आउटपुट्स आएंगे एंड अकॉर्डिंगली आपका डिफरेंस जनरेट होगा, राइट? सो यू आर अगर आप इसका गेन कैलकुलेट करें फॉर दिस डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इट इज द डिफरेंस ऑफ V1 and V2 times the AD which is basically gain. And एक्चुअल सिनेरियो में होता ये
कि आपकी जो दो वोल्टेजेस होती हैं, एवरीथिंग कॉमन, इफ़ यू सी दीज टू, ठीक है, एवरीथिंग कॉमन इज काइंड ऑफ, देयर इज नथिंग कॉमन इन दीज टू वोल्टेजेस, ठीक है, व्हेन इट्स मिनिमम इट्स मैक्सिमम, व्हेन इट्स मैक्सिमम इट्स मिनिमम, ठीक है, टोटली फ्लिप्ड है। सो यू कैन से द आउटपुट जो है यहाँ पे अगर आपका जो डिफरेंस होगा वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, आउटपुट पे देयर इज़ नथिंग कॉमन, तो आपका वी आउटपुट इज़ ज़ीरो आइडियली, राइट, बट एक्चुअल में there is something common between these two set of voltages. So we basically we introduce a new term which is um, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, आपने सुना होगा, ठीक है। सो कॉमन मोड गेन, ठीक है, जिससे आपका डिफरेंशियल गेन है एंड द डिफरेंस ऑफ टू वोल्टेजेस, सिमिलरली आपका कॉमन मोड गेन एंड द सम ऑफ टू वोल्टेजेस डिवाइड बाय टू मींस वट एवर इज कॉमन half it, ठीक है, consider the half of it and its gain is equivalent to the output, ठीक है। This is how these are the two main set of differential amplifier equations, right? Ideally it's this equation, but in actual scenario this is your equation, right? So moving toward your op-amp characteristics, because there is a large set of details, ठीक है, तो you should know कि आपकी इनफाइनाइट गेन होता है, आपका इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस होता है। सिमिलरली इफ इनपुट इम्पिडेंस इज इनफाइनाइट देन इट मीन ज़ीरो आपका इम्पिडेंस होगा ऑन योर आउटपुट साइड, राइट। ज़ीरो ऑफसेट वोल्टेज, इनफाइनाइट आउटपुट वोल्टेज, बैंडविड्थ आपकी इनफाइनाइट होती है, देयर ज़ीरो नॉइजेज, आइडियल सिनेरियो की बात करिए, इनफाइनाइट common mode rejection ratio, ठीक है। So what it means that whatever is common between the two input voltages, it is rejected by the op amp, ठीक है। So it's infinite. It similarly आपकी पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, जो भी आपकी पावर में फ्लक्चुएशन या फ्लिकरिंग इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है, उसको रिजेक्ट करने का रेशियो भी आइडियल ऑप एम्प्स में इनफाइनाइट होता है। सो मूविंग टुवर्ड दी parameters or the ideal characteristics, acha as I said, open loop gain, well acha there are two set of concepts, one is the open loop gain and one is the closed loop gain, ठीक है। So when we are giving the feedback, ठीक है, in that way we are उस केस में हम कहते हैं दैट्स अ क्लोज लूप, ठीक है, एंड फीडबैक की वजह से आपका गेन में ड्रॉप आ जाता है। ओपन लूप गेन इज आइडियली इनफाइनाइट, बट एक्चुअली आपका कुछ इन रेंजेस में लाइन करता है, ठीक है, अप टू मेगा आपकी वैल्यूज जाती हैं, राइट, ठीक है। इसी तरह इनपुट इम्पीडेंस भी आपकी इनफाइनाइट नहीं होती, इट्स अ specific value because there are minor currents in picoamperes and milliamperes flowing between the two terminals, right? ये जो आपके दो टर्मिनल्स हैं इनके बीच में ideally there is no current flow, ठीक है। So whatever is the voltage here is actually appearing here, but actual में आपके milli and micro picoampere, sorry, very small current flow होते हैं, so there is a concept of current and an impedance which is very high, right? So what else? Acha, there is a concept of DC imperfections, right? अच्छा, DC stands for आपकी जो DC voltages हैं, right, उनके लिए stand करता है। So there is a finite gain, ठीक है, जो आपका as I said previously, now this gain is basically DC gain, ठीक है। And when we are talking about input offset voltages and currents, ठीक है, again these are DC, and आपके जब ये दोनों concept exist करते हैं तो ये आपकी ड्रॉप, आपकी जो आउटपुट है उसको सेचुरेशन में लेके जाते हैं। सिमिलरली आपकी जो इनपुट आउट ऑफसेट वोल्टेज अगर एग्जिस्ट करती है तो बेसिकली एम्पलीफाई करती है आपके जो आउटपुट पे आपकी अपीयर हो रही होती है, जो फाइनल वोल्टेज अपीयर होती है, जो एक्चुअल से एम्पलीफाइड आती है, ठीक है। सो दीज आर दी ड्रॉबैक्स ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड करंट। नाउ दीज आर बेसिकली इम्परफेक्शंस, ठीक है। गेन आपका फाइनाइट है, आपकी एक ऑफसेट वोल्टेज एग्जिस्ट करती है, आपका ऑफसेट करंट एग्जिस्ट करता है, देयर इज़ अ कॉमन मोड गेन इटसेल्फ, आपके टेम्परेचर से आपका एम्पलीफायर इफेक्ट होता है। नाउ देयर आल्सो एसी इम्परफेक्शंस आती हैं, जहाँ पे आपकी डीसी ख़त्म होती है हायर फ्रिक्वेंसीज पे, देन देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एसी इम्परफेक्शंस, वहाँ पे आपके स्ल्यू रेट्स आता है, फाइनाइट बैंडविड्थ आती है, आइडियली इट्स इनफाइनाइट, लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, इट्स अ फाइनाइट बैंडविड्थ। स्ल्यू रेट ये होता है
बिकॉज वी आर सेइंग कि हमारा इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ है, तो जो भी इनपुट आएगा अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट उसके साथ मैचअप हो जाएगा, चेंज होगा. बट एक्चुअल में क्या होता है, देयर इज अ मैक्सिमम रेट एट विच योर आउटपुट कैन चेंज, ठीक है, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन. दैट rate is basically slew rate, and it is a limitation of your finite bandwidth. Similarly, stability भी है, it's again a bandwidth limitation. अगर आपका माइनर फेज डिफरेंस आता है इनपुट आउटपुट में, इट कैन लीड टू पॉजिटिव फीडबैक्स, एंड पॉजिटिव फीडबैक से क्या होता है, आपका ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. सिमिलरली माइनर डिस्टॉर्शन और नॉइज और इनपुट कैपेसिटेंस जो है आपके इम्पिडेंसेस को ड्रॉप डाउन कर लेती है, ठीक है. पावर सप्लाई रिजेक्शन अगर आपकी हाई ना हो, दैट केस जो आपकी फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी रिपल्स होते हैं वो आपके अगेन वो आपकी इनपुट जो आपकी है उसको डिस्टॉर्ट करते हैं, आप बायसिंग को डिस्टॉर्ट कर देते हैं. सो लेट्स मूविंग टुवर्ड योर before going into the details of your open loop gain and your let's stop the video here because it will be more than 15 minutes and there will be an issue of uploading. So uh, let's continue on your frequency response curves and finally your op-amp detail, right, in the next part of this video, okay. So let's move toward your second part of theory of lab number 6, and it will also be covering your theory of lab number 7 and 8, which is on closed loop gain of op-amp, okay. Now we will be covering open loop gain, then we will be calculating offset voltages, slew rates, right, sorry slew rates नहीं, offset voltage आपकी जो offset currents होते हैं, open loop gain. Then we will be using the two techniques in lab number 7 and 8 of inverting एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एंड ये सारी थ्योरी नेक्स्ट पार्ट में आपकी कवर होगी. एंड फाइनली आपके जो सारे सिनेरियोज जब मर्ज अप होते हैं तो आपके व्हाट्स द डिफरेंस, हाउ यू कैन पिक अप द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दी सिनेरियोज, राइट. सो लेट्स मूव टूवर्ड द second part of your theory which will be on lab number 6, 7 and 8.